So, Namaskar all of you. So, today we will discuss our Odisha Civil Service last year जो GS paper 1 थिला 2021 रो तारो first पांचटा questions हमें discuss करिवे. Okay. So, every paper previous year question जदि हमें देखिबा ताको हमें सेमती तीनटा की चारटा पार्ट रे करिके ताको डिटेल डिस्कशन करिबा. तो आज हमें बेसिकली फर्स्ट 5 questions जोड़ा रही सेटा डिस्कशन करी. Before we start, केतेटा जिंस आपन जेठी मन रखिया पड़िबो नुवा पैटर्न रे जोटा हमर जेते बेले अपन आंसर करिवे यू हैव टू कीप इन माइंड द टाइम लिमिट. ठीक है 20 टा क्वेश्चंस आसुची 10 टा क्वेश्चन 10 मार्क्स रो आउ 10 टा क्वेश्चन 15 मार्क्स रो 250 मार्क्स 3 आवर्स रो अपन आसुची. तो एवरेज रे जो 10 मार्क्स क्वेश्चन आसुची अपन तापई आपण पाखापाखि 7 मिनिट्स टाइम आपण देबे. ओके आउ एटा कहबो गले आगुर जो 3 आवर्स आउ 300 मार्क्स हमर आसुतला सेतरे 6 मिनिट पाखापाखि पड़तला 10 मार्क्स पे. तो 1 मिनिट अधिक हमको मिलछु. आउ 15 मार्क्स क्वेश्चन पई अराउंड 10 मिनिट्स आपण को मिलछु. 10.8 एमती किछि मिलिबो बट ताको हमें द कंटीन्यूअसली लिख परियो नै तो 10 मिनिट्स हिसाब रे हम चले. तो एटा प्रथमे आपण माइंड रे रखि दियंतु कि हमर 10 मार्क्स पई मते 7 मिनिट भीतर आंसर लिखिबार अछि 15 मार्क पई 10 मिनिट भीतर आंसर लिखिबार अछि. तो तेतरे लाभटा कोन हो ना आई एम नॉट गोइंग टू मिस ओके एनीथिंग. सपोज केतेटा क्वेश्चन बहुत इजी पड़थिबो जोटा मु भलो रे प्रिपेयर करथिबि तो ताकू से ऑल्दो 10 मार्क पड़छि मु सेठी 10 12 मिनिट लिखि देबि मते एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलिबोनी किंतु अलगा क्वेश्चंस पे मते प्रॉब्लम नै जिवो. सो टाइम मैनेजमेंट टा बहुत इंपोर्टेंट आउ प्रथम रही अपन टाइम हिसाब रे देखिकी लेखन. तो आमे कोन करिया नै जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिका मु तो एथरे हमर पॉइंट्स उडा आपण ओके निजे ओटे नोट करिके सेतरे यू कैन टेक डाउन द पॉइंट्स एंड बेसिकली व्हाट यू कैन डू आफ्टर द डिस्कशन आपण सेटा फुनी ट्राई करंतु सेतिकी टाइम भीतर तो गोटे क्वेश्चन करी स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन 7 मिनिट भीतर मते सारिबार अछि. तो ए 10 टी पॉइंट मु पढिली देन आई विल राइट इट विदिन 7 मिनिट्स ताहले जाई कि आपन को राइटिंग स्किल्स भी बढ़िबो आउ विदिन टाइम आपन ओके क्वेश्चन टा कंप्लीट करि पारि. तो हमें एमती केते गुडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करी कि तापरे किछिटा ओपन टेस्ट करी के भी हमें रखिबा. ओके दैट विल बी अपार्ट फ्रॉम द जोटा कि टेस्ट सीरीज करी के रहबो. So let us start with the last year 2021 ro GS paper 1. Okay, first question, first come to the question, understand the question, then we'll see kon points amare thare dabar ach. Do you consider that the impact of medieval mystic saints and Sufi poets were rather ephemeral on deep seated structure of Indian society? So seta apanko opinion pachach. Do you consider? Okay, क्वेश्चन टा बुझंतु जो मिस्टिक सेंट्स और सूफी पोएट्स करिका थिले ओके मेडिवल टाइम रे भक्ति मूवमेंट हला ओके सूफी मूवमेंट हला एंड मेनी अदर सच मूवमेंट्स वर देयर एट दैट टाइम. एफेमरल माने कोन सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ठीक अछि. सो कि इंडियन सोसाइटी रो जो डीप सीटेड स्ट्रक्चर एटी डीप सीटेड स्ट्रक्चर अर्थ से कोन कहूची ना जो तारो जहा सब डिफरेंट नॉर्म्स थिला ओके डिफरेंट रिचुअल्स थिला कि आपण कहि परिबे कस्टम्स जहा सब थिला ताकू भांगी की ओके मोर इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करिबारे ए माने केते हेल्प करि पारले. ठीक अछि. मेजर इश्यू से तो कोन थिला वुमन करो कंडीशन डिप्रेस्ड क्लासेस करो कंडीशन मेनी सोशल इविल्स वर देयर. सो ए जो सूफी आउ भक्ति मूवमेंट करिका ओके से सूफी पोएट्स पर्टिकुलरली क्वेश्चन रे देछि एंड मिस्टिक सेंट्स को भीतर बाकी समस्त भी जाउचंती से टाइम रो ओके जो माने भक्ति आउ सूफी मूवमेंट रे थिले एंड अदर रीजनल मूवमेंट्स आल्सो. तो से माने किछि गोटे सोशल बडो सोशल रिफॉर्म करि पारले कि ना से माने जे एडवोकेट करूथिले सेटा जनरल मास जोडा थिला तांको पाखरे पहुंच पारथिला कि इफ यस ताले कोन चेंजेस से माने कले. ठीक अछि. तो काइना एटा आपन को ओपिनियन टा पचाछ राइट. तो एटा हला दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन कि सुपरफिशियल इंपैक्ट थिला ना डीप इंपैक्ट थिला आउ सेटा आपन को
you have to give some examples and show. So obviously ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବହୁତ ସେଟା through their କି equality हो ना caste କିଛି ନାହିଁ କିମ୍ବା woman को ଆହୁରି ଆପଣ okay emphasis ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର. So medieval mystic saints and Sufi poets तारी ऊपर concentration अपन रखिबार अछि. So गोटे 1 की 2 लाइन रो definition introduction आगे अपन देबे. एठी जेमती introduction देछि, this is one model answer. ओके एथरे मेन है पॉइंट्स केतेटा दउछि. लेट्स से हमें 10टा पॉइंट पढुछु तो 10 मार्क क्वेश्चन एटलीस्ट 6 पॉइंट्स होबा कथा. आपन को राइटिंग स्पीड ऊपर भी डिपेंड करे. आपन जति के अधिक दउछन आउरी भलो. 15 मार्क क्वेश्चन से अराउंड 12 गुड पॉइंट्स आपन को दबार अछि. ओके सो आपन एति के लिखिया फर्स्ट लिखिया पे चेष्टा करंतु. ओके कि एति के लिखिया मते टाइम केते नउछि. इंट्रोडक्शन में कोन देलु. Mystic saints and Sufi poets played a crucial role in the spiritual and cultural development of medieval India. Their influence, however, on the deep-seated structure of Indian society is the subject of analysis. Okay. कौन analysis केमती करिबा तो impact कौन थिला तांकर. So first हला promotion of unity. Okay तो समस्ते गोटे कुछ कास्ट नहीं किछि rich poor etc. से गुडा से माने okay denounce करथिले. So it encouraged religious harmony but failed to eliminate rigid societal barriers. सेटा तो हमें आज भी देखुछु. ठीक है से चेष्टा करथिले एनकरेज रिलीजियस हार्मनी बट ए जो डीप सीटेड स्ट्रक्चर जो सोशल स्ट्रक्चर्स ता सहित जो सोशल इविल्स उडा थिला दे वर अनएबल टू टोटली इरेडिकेटेड. ओके तापरे तो एटा हला पॉइंट नंबर 1 आपनकर प्रमोशन ऑफ यूनिटी. तापरे असला कल्चरल इन्फ्लुएंस कल्चर ऊपर कोन इंपैक्ट पकैथिले आउ कोन चेंजेस ओके सेथरे से माने आनथिले. सो दे एनहांस्ड लिटरेचर म्यूजिक एंड आर्ट बट विथ ए लिमिटेड सोशल इंपैक्ट. तेनु जो इंटेलिजेंसिया अछि ओके सो तांको पाई मे भी किछि इंपैक्ट पड़ला लिटरेचर आर्ट म्यूजिक बट लिमिटेड सोशल इंपैक्ट. ओके तापरे एफेमरल इफेक्ट ऑन कास्ट सिस्टम. तो से माने भक्ति सेंट्स हुंतु कि सूफी सेंट्स हुंतु से माने कास्ट सिस्टम अगेंस्ट थिले एंड द मेजर इश्यूज विथ द कास्ट सिस्टम ता अगेंस्ट से माने थिले इविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम. बट were they successful in destroying the caste system or ताकू जहा evils थिला सेटा ठीक करिबा. ओके सेटा से माने सक्सेसफुल हे नथिले. सो एफेमरल इफेक्ट ठीक अछि. सबले मने रखिबे गोटे कि जो टर्म्स उडा क्वेश्चन रे दिया हिची सेही टर्म्स उडा दी आंसर रे यूज हबो आउ तक अपना अंडरलाइन करछंदी यू विल गेट मोर मार्क्स. ओके एटा गोटे मॉडल आंसर एठी जेंति सब हेडिंग्स देछि तापर तार गोटे की दी लाइन एक्सप्लेनेशन दोछि. एक्चुअल एग्जाम रे आपन को टाइम न मिल पारे जे एमती लिखि पारे तो बहुत ही भलो बट एक्चुअली प्रैक्टिकली एटा लिखि होबो कि नै. सो यू कैन डायरेक्टली गो विथ द ओके जोटा तार explanation touch. Okay so they were unable to make lasting changes to the deeply entrenched caste society. Okay tapare teachings on equality. So again se manakara theory re kinda poems re se सब जिंस थिला बट ग्राउंड लेवल रे सेटा इंप्लीमेंट करबा डिफिकल्ट थिला काना पावर तांको पाखर न थिला. ओके सो स्प्रेड ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एटा सबटु गोटे बड़ एडवांटेज तार थिला कि local languages both promote hela. Okay so it promoted local languages but did not transform the socio-cultural fabric. Influence on bhakti movement inspired religious movements like bhakti. Okay but with limited social transformation. Social transformation ta जो हिसाब रे क्वेश्चन पचारि छी ओके सो सेटा सही सुपरफिशियल लेवल रे रह गला. पूरा मास लेवल रे डीप ओके और ए ग्रासरूट लेवल चेंज सेटा हे परला नै. तापरे आउ गोटे जेहेतु आमे एथरे ओडिसा रो भी किछि पॉइंट्स ऐड करि दे परिबा. सो ओडिसा रो इन्फ्लुएंस एटी कोन थिला लाइक भीम भई हे गले. ओके सो दे स्प्रेड द मेसेज ऑफ यूनिटी. मेनी अदर सेंट्स वर आल्सो देयर ओडिसा रे. ओके बट लेगेसी वाज कन्फाइंड टू लिटरेचर. ठीक अछि माने ग्राउंड रियलिटीज बेसी चेंज हे परला नै. देन सूफी इंपैक्ट. तो भक्ति इंपैक्ट देखियो सूफी इंपैक्ट दे promoted through promoting love and compassion Sufism social impact was minimal. Okay so though they promoted love or compassion but again deep entrenched जो social values customs जोटा कि क्षेत्र evils भी थिला भलो भी थिला ताकू चेंज करी हेला. Role in spiritual evolution so focused on spiritual elevation. Okay then societal transformation ताका main okay bhakti for example or Sufi so it's like आपण पर्सनल गॉड संगे केमती आपनकर रिलेशनशिप ता रहइबो. ओके तो ता ऊपर बेसी एम्फेसिस थिला स्पिरिचुअल एलिवेशन बट सोशल रिफॉर्म सोशल ट्रांसफॉर्मेशन
that was, you can say, ancillary or a by product से हिसाब रे से चेष्टा करथि. Okay, unlike जोटा आउ गोटे क्वेश्चन रे पचारची, लेट्स से हमरो मॉडर्न एरा रे, तो सेठी कोन लाइक लेट्स से राम मोहन रॉय हेले, ओके, किंबा आपनकर other social reformers हेले, तांकर concentration थिला social reform ऊपर. ठीक अछि, where religion may have been used as a side tool. Okay, but एठी उल्टा थिला, एठी mainly the relation between the personal god and the, okay, person. ठीक अछि, the worshipper, ता भीतर relationship ता ता ऊपर फोकस थिला, माने spiritual elevation ऊपर फोकस थिला, राइट. और तापर लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन वुमेन स्टेटस. तो ऑल्दो से माने ए जिंसटा कहूथिले थ्रू देयर लिटरेचर, थ्रू देयर पोएम्स परिका, कि वुमेन मानन को आपण अधिका राइट्स दबार अछि, ता कंडीशन बेटर करियार अछि, बट दैट डिड नॉट मेक ए एक्चुअल ग्राउंड लेवल डिफरेंस. ठीक अछि. सो एटा हला तार ओडे एनालिसिस टे. नाउ सपोज हम उल्टाटा लिखिया पे चाहू, माने हां एटा पूरा ग्रास रूट लेवल चेंज हला, देन यू हैव टू गिव सम एग्जांपल्स. এই যে পয়েন্টস রা, এই পয়েন্টস को काटी की जस्ट सारा ऑपोजिट आपण दबा पई जदी चाहिबे सेमती दे परिए, बट इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट कैन फैक्चुअली स्पीकिंग. ओके, तार सोशल इंपैक्ट आपण जदी देखिबे मोर और लेस सुपरफिशियल ही थिला, बहुत बड़ सोशल चेंज एतरे हे जे नथिला. ओके, तापर वन और टू लाइंस ऑफ कंक्लूजन. एठी जा कंक्लूजन देछि, mystic saints and Sufi poets of medieval India left a rich legacy but had rather ephemeral impact on deep-seated structure of Indian society. Their noble teachings remains largely confined to spiritual domains without causing a significant shift in societal norms. So language has to be very simple. Jete simple lekhibe sete adhika marks apanku melibe. I hope this is clear. The first question. Okay, as I told you, jetera points dela 7 minute रे सब पॉइंट केबे भी लिखि होबो. ओके, आमे 10 टी पॉइंट जानथि रे, हां ता भीतर 6 टा मिनिमम तो 6 टा लिखिया पड़ियो 10 मार्क पे. अपन 2 टा 3 टा पॉइंट लिखि देकी बेसी मार्क्स आसीबो. Okay, so always remember points or multifaceted or multi-dimensional answer हबा कथा. केते डायमेंशंस देछि, केमति आपण मल्टीपल डायमेंशन जते अधिक डायमेंशंस दे परिबे. बुझि पाले. Now come to the second question. Who and why did the woman question occupy the center stage of social reforms in India during 19th century? How and why? Okay, woman question माने कि the issues of women तांग संगरे जा सबु injustice होची, तांग स्पेस दिया होनी, एजुकेशन पई तांग व्यवस्था होनी, पॉलिटिकल स्पेस दिया होनी. से क्वेश्चन टा दी टाइम्स ऑफ आइला. फर्स्ट रा हाउ, काहे की आसिला, ओके, केमिति आसिला. ठीक है, तो ए दीटा एस्पेक्ट को आपर लेखियार अछि. आउ लेखि देछि भी को समय 19th century रे you have to focus on that. Okay, so one line or two line introduction. The woman question became a focal point of social reforms in India in 19th century. The period marked the awakening of social consciousness, particularly towards rights and status of women. Okay, so the line of introduction है. Now come to the जहाँ क्वेश्चन पचारला, how and why woman question occupied the center stage. तो फर्स्ट है एजुकेशन. स्लोली अपन 19th century रे वुमेन एजुकेशन रो एवेन्यूज गुडा बढ़िला, जहाँ व्यवस्था थिला आउरी सेटा भलो हैला गवर्नमेंट थ्रू रु प्राइवेट सोर्सेस रु, राइट. एटी एग्जांपल देछि जेमति फर्स्ट है एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन वुमेन्स एजुकेशन एज ए टूल फॉर एम्पावरमेंट. गोटे बहुत बड़े एग्जांपल से बेथुन स्कूल रो देछि. ओके, ठीक सेमति आमे सेम जिंसटा भी दे परिबा. ओडिसा रे भी सेमति एग्जांपल्स थिबो. सबले ओडिसा रो जदि हम एग्जांपल दबा ताले मार्क्स हमरो बेटर आसी. देन लीगल रिफॉर्म्स. ओके, तेनु गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत गुडे लीगल रिफॉर्म्स कला, जो थरे की जो एट्रोसिटीज होतिला, जो डिस्क्रिमिनेशन होतिला अगेंस्ट द वुमेन, सेडा स्टॉप हैला. सेथरे इंडियंस मानकर भी रोल रहितिला, फॉर एग्जांपल राममोहन रॉय हेले एंड अदर्स. ओके, सो लीगल रिफॉर्म्स, एनैक्टमेंट ऑफ लॉज to address social evils like sati, child marriage, widow remarriage, etc. Then British influence. So Western thoughts on gender equality influenced Indian reformers. Raja Rammohan Roy हुंतु, okay, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुंतु, माने जेते सब एजुकेशन हला, ओके, की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हला, लीडरशिप हला, ए सब जिंस रे वुमेन मानको को आगु को बढ़ेबार अछि, राइट. सो दे मोस्टली जो माने एई टाइम के जो माने लीडर्स थिले, मोस्ट ऑफ देम हैड इंग्लिश एजुकेशन. तांकर इंग्लिश एजुकेशन रो बैकग्राउंड जोगु, ओके, कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जोगु आपण कहि परिबे दे वर, ओके, keen on giving more rights to the women. ठीक है, breaking the shackles of the patriarchal mindset, जोटा कि गोटे ट्रेडिशनल इंडिया रे आपण कहि परिबे थिला.
नॉट दैट कि वुमेन मान को रेस्पेक्ट दिया नथला कि वुमेन को राइट दिया नथला एंशिएंट इंडिया रे आपण पढियो बहुत लिटरेरी फिगर्स भी आपण को वुमेन थिले ठीक अछि rise of Indian intellectuals like Rammohan Roy. Okay, they actively advocated for women's rights. Then missionary activities. So Christian missionaries focus on education and women's welfare. So seta bhi gote aspect rahila. Literary contributions, emergence of women writers advocating for gender equality. Okay, किए caste equivalence ପାଇଁ caste जो problem थिला सेटा कहले किए education कथा कहले okay जेमति कि सावित्रीबाई फुले right then nationalism so linking women's emancipation with the broader nationalistic movement and you know that in all stages okay say moderate level रे हुअतु कि आपनकर extremist माने हुअतु गांधीयन एरा रे हो revolutionists माने हुअतु सबु जगह रे important women leader were there ठीक अछि एनी बेसेंट हुअतु कि लेट्स से आपनकर दुर्गा देवी हुअतु फॉर द revolutionaries ओके सबु जगह रे आपण देखिबे कि women leaders माने in every domain you would find women leaders so nationalism linking women's emancipation with broader nationalistic movement tapare social movements so formation of women centric organizations to address issues like dowry widowhood etc then Odisha's perspective so ethi amara jeti through literature जेमती फकीर मोहन सेनापति का कथा लिखिछंती okay he raised voice against widow discrimination and other aspects also in his writing ठीक सेमती participation of women okay at that time 19th century कथा हम okay so सेगुडा भी आपण दे परिए वुमन लीडर्स को ना आपण दे परिए ओडिसा's perspective then women participation so public life out political struggle re more and more women came to the forefront one or two names also we can give जोटा हमें discuss करू okay ओडिसा रो भी गोटे ता भितरे रहबा दरकार so again एटी बहुत गुडे points अछि we can't write all the points in 7 minutes at least okay 6 points आपण को दबार अछि 10 मार्क पे 6 पॉइंट okay आपण को लिखिया पे पड़िबो तो आपण निजे क्लॉक करंतु निजे स्पीड ता केते होची मु 1 2 लाइन गोटे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखिबी ओके आउ गोटे जिंसो एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा ऑलरेडी आंसर राइटिंग क्लास रो फर्स्ट क्लास रे ओके ऑलरेडी आपण सर कहि सरचंदी जस्ट फॉर द अदर स्टूडेंट्स जे क्लास नउचंदी आपण आंसर राइटिंग पई से ए वर्ष 2021 रे टॉप 10 भीतर रहिचन से सर सो फर्स्ट जिंसो कहले कि आपण जहा भी लिखिबे ए जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एटा आपण को बुझिया पे एटा क्वेश्चन माने आंसर स्क्रिप्ट रे लिखि देबे ठीक अछि तो जोटा फर्स्ट दी लाइन लिखा हबो इट इज अंडरस्टूड दैट इज इंट्रोडक्शन बट बॉडी ऑफ द जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स एगुडा देबे एगुडा दिया हबो ओके बट वी विल नॉट राइट समथिंग कॉल्ड इंट्रोडक्शन in the answer script or we will not write something called conclusion in the answer script eta apan bujhiya pe diya ichi right so 19th century marked a significant turning point in India including Odisha where women question took center stage in social reforms driven by various factors like education legal reforms and social consciousness these efforts laid the foundation for the journey towards gender equality in India okay eta is the second question now before going to the third question I'll just would like to tell you about the mains test series okay mains test series 23 तारीख from start होची जो थरे 30 टा आपनकर लाइव टेस्ट विथ डिस्कशन रहउची और 40 टा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रहउची माने टोटल यू विल बी गेटिंग 70 टेस्ट जो 30 टा लाइव टेस्ट रहउची सेगुडा आपनकर ऑल 3 आवर्स सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1 आवर रो भी रहउची 2 आवर रहउची 3 आवर रो भी रहउची ओके सो course fee तारो रहउची क्लासरूम पाई 3500 आउ 2500 फॉर द ऑनलाइन बैचेस एटा तारो आइटिनरी और शेड्यूल आपण कहि परिबे सो एटा 23rd अक्टोबर रु 23rd एंड 25th दीटा डेमो टेस्ट अछि इट इज फ्री फॉर ऑल एज सच भी एंटायर टेस्ट सीरीज रो हमर डिस्कशन हबो ओके सेटा टेलीग्राम चैनल रे भी हबो आउ हमर YouTube रे भी सेटा रहइबो ओके सो एटा तारो डिटेल आइटिनरी टा ऑल पेपर्स आर कवर्ड okay that is your GS 1 2 3 4 compulsory English Odia and essay okay in these 30 tests and 40 other self assessment tests that are okay so going back to our question 3 discuss the present natural resource conservation policy of Odisha एटा गोटे बहुत ही मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन देला काहे कि ना
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेस କନଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍सेस ଆମର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ତାପରେ କୋଷ୍ଟାଲ ରେଗୁଲେସନ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରୀନ ପଲିସିज ହେଇଗଲା ବହୁତ ଆଡେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଲେଖି ହବ ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ 10 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ 10 ମାର୍କ 7 ମିନିଟ୍स 7 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ କେତିକି ଲେଖିପାରିବି ଯେତିକି ଏଠି ସେ ଦଉଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ସବୁଗୁଡା ଲେଖି ହବ ଓକେ ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିମ୍ବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଗୁଡା ଫରେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ମିନେରାଲ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ୱାଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇ ତିନିଟା ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଲେଖିବାର ଅଛି ତାପରେ others are also there. Odisha, situated in eastern India, is blessed with diverse natural resources like forests, minerals, and water. State government's effort to conserve these resources are encapsulated in various policies. The forest asira forest में multiple policies अच्छी but then okay जोटा आपनकर recent किंबा जोटा major policy. So Odisha Forest Policy 2017 aims to manage forests sustainably to protect wildlife and engage communities in conservation. Okay, so जोटा आपनकर एफसी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ओके अदर्स ता सहित एटा रहउची एठी कोन ना यू जनरली विल नॉट गिव सेंट्रल लेजिस्लेशंस ओके कोन भाई ना ये कहउची तार फॉरेस्ट कंजर्व और रिसोर्स कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेस कंजर्वेशन पॉलिसीज ऑफ ओडिशा ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट रो जोड़ा पॉलिसी सेगुडा हम दवा पड़े ओके तापरे मिनरल पॉलिसी अगेन एबे रिसेंटली मिनरल पॉलिसी आपनकर अपडेट हेची ओडिशा मिनरल पॉलिसी 2015 focuses on sustainable mining, environmental protection, and equitable benefit sharing. Okay, then water policy asila. Okay, ensures water conservation, rainwater harvesting, and promotes water reuse. Other policies apanakara energy policy. Okay, 2015 promotes renewable energy and energy efficiency. Okay. So climate change policy 2016 mitigates and adapts to climate change effects. तापरे जोटा CRZ हम कहतलु coastal zone management policy 2018 it protects the coastal area because बहुत बड़ा coastline हमर अछि examples किछि दे परिबे banning tree felling in sanctuaries and parks establishment of community forests for local management okay एथरे अलगा भी बहुत बड़े इंसो for example water policy रे आपण एठी watershed management ऊपर लिखि परिबे ठीक अछि आउ ऑर्गेनाइजेशंस वाल्मी एंड अदर्स आर देयर बट अगेन सब जिंस हला 7 मिनिट रे केमति सारी ठीक अछि तो सेति पई टू दी पॉइंट गोटे दी लाइन देखिबाटा बेटर देन गोटे को एक्सप्लेन करकी दी तीनटा पॉइंट से सार दबा ओके केते अधिका पॉइंट्स आपण दे पाउछन promoting renewable energy like solar wind power and launching awareness campaigns for natural resource conservation conclusion re Odisha government demonstrates a strong commitment to natural resource conservation. The policies and initiatives mentioned above reflect the state's approach to preserve its natural wealth, aligning with broader Indian perspectives. Okay. ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କଣ ନା ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ଏଠି ଦବାର ନାହିଁ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶାର ଦବାର ଅଛି ଓକେ ଦେନ୍ explain regional incidence of poverty in Odisha. So it different forms agru padi sarchi. So it jitla ame analysis ପାଇଁ jiba. Okay. At that time we will study regional disparity. Regional disparity se ta upare gote question jemti bi asiba directly indirect. So poverty in Odisha is critical concern that has regional variations within the state. Despite improvements in overall poverty rates, disparities exist across different districts. An analysis of regional incidence of poverty provides valuable insights into underlying challenges and socio-economic dynamics. Okay, the first is overall poverty rate. Okay, so our national level ru bahut adhika achi amara higher than the national average. Okay, then urban and rural divide, right? Then district wise variation like Nabarangpur Kalahandi as compared to coastal areas. Okay, sethi apanଙ୍କର ଅଧିକା poverty apanଙ୍କର ରହୁଛି. Then agricultural dependence जो districts गुड़ा ओडिशा as a state obviously depends on agriculture but still then किछिटा जगह रे जोटा कि industrialized districts अछि ता अपेक्षा जदि आपण देखिबे जोटा agricultural districts अछि जोटे ते industries नाही agriculture ऊपर बेसी focus आपनको रखा होची तो सेठी कोन होची ना आपनकर ओके अधिका poverty levels आपण कहि परिबे. So regions relying heavily on agriculture tend to have higher poverty levels due to vulnerabilities to monsoon and market fluctuations. Lack of industrialization, so areas with less industrial development exist
exhibit higher poverty. So dita jako agricultural dependence or lack of industrialization dita jako okay you know pakapaki apna koi paribe okay uh, both are related to each other. तापर एजुकेशनल डिस्पैरिटी सो किछटा डिस्ट्रिक्ट से एजुकेशनल एवेन्यूज भी बहुत कम अछि ऑल्दो गवर्नमेंट थ्रू लाइक आदर्श विद्यालय एंड अदर्स सेटा बहुत ट्राई करछन ताकू ठीक करिया पे बट स्टिल देन regions with lower literacy rates often correlate with higher poverty levels. Healthcare access, the lack of healthcare facilities in certain regions, okay, uh, excavates poverty due to increased healthcare expenditure. तामाने जो जगह रे आपनकर बेसी हॉस्पिटल्स नहीं भलो हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं सेठी लोगों को हेल्थ केयर पे इधर ताकू एक्सेस मिलुनी जल्दी भी ताकू एक्सेस करार अछि ताकू खर्च करिया पे पड़ियो. Okay, so some government initiatives you can give. Odisha Livelihoods Mission and many other initiatives are there. Di tinta likhi paribe. Tribal population, tribal dominated areas face higher poverty due to limited access to resources and opportunities. It is slowly changing, but more or less other districts to compare kale, okay, government is trying very hard ki seti auri jemti development ho. Then comparative perspective, Odisha's poverty scenario reflects a broader trend within India where regional disparities persist across various states. Examples किचड़ा से देचन बिजू पक्का घर योजना देची ओके आउ नेशनल स्कीम जोड़ी इंप्लीमेंट होची नरेगा जेमती देची ओके conclusion the regional incidence of poverty in Odisha is a complex phenomena influenced by various factors like geography, industrialization, education and healthcare. Addressing these disparities requires a nuanced region specific approach aligned with both state and national initiatives. Okay, question no demand kon thila etare regional incidence of poverty in Odisha. Okay, এটা ଗୋଟେ generic ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ ଯଦି କଣ ଆମେ add କରି ପାରିବା more data you can add तो से डाटा ପାଇଁ किछटा जेते you know we will discuss some other questions माने आपन को एथरे किछि districts रो like for example western ओडिसा रो ओके आउ कोस्टल ओडिसा रो southern ओडिसा रो से किछि डाटा हमें जदी दबा ताले आउरी अधिका मार्क्स हमको आसी परिबो ओके so that was question number 4. Fifth question, that is the last question for today's session. Critically examine the role of pressure groups in political process in Odisha. Critically examine okay pressure groups in political process of Odisha. तो semane ताଙ୍କ काम कोन कोन करिसंती किछटा examples. Pressure groups comprising interest or advocacy groups play a pivotal role in the political process of Odisha. They actively influence policy making and governance, but their role can be seen in both positive and negative lights. Okay, the critical examination जब अपन करिबे first है policy influence. Okay, तो policy influence कौन they positively contribute by providing specialized knowledge. Also तांकर for example let's say हमें कहबा कि IT sector रो तांकर जो pressure की advocacy group जे थिबो सी ए देखिबो कि मो sector को जेमति maximum लाभ मिलु so may exert undue influence on policy in favor of specific interest जोटा कि तांकर निज interest थिबो. Public opinion formation so helps in shaping public opinion through awareness campaigns, sometimes manipulate information to align with their goals. तांकर लाभ होबो कि तांकर इंडस्ट्री रो जोटा लाभ होबो सेटा से देखि ठीक अछि. So pressure group सबु डोमेन रो pressure groups अछंती एबे फॉर एग्जांपल हमरा प्राइवेट बस मालिक संग तांकर इश्यूज चलती कि जो लक्ष्मी बस जोटा आछि सेटा जो रेट रे से माने दउचंती ओके गवर्नमेंट जो टिकट्स ला दउची सेटा पॉसिबल होबनी तांको दबा पे तो से माने तांकर करंटली जो रेट अछि सेटा सब्सटेंशियली हायर ओके तो केमती से माने सर्वाइव करे कोन तांकर जा इश्यू चलची तो दे आर आल्सो हेल्पिंग अ लॉट गवर्नमेंट को से माने बहुत टाइम पे बहुत हेल्प करंती फॉर एग्जांपल if you see during disaster management hela कि हठात किनी जतले मैन पावर दरकार पड़ची गवर्नमेंट पाखरे तो एते बसेस नाही कि से यू नो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस की ट्रूप्स हला कि मैन पावर हला सेउडा करिवो तो बहुत जगह रे तांकर बहुत हेल्प निया जाय ओके so sometimes they manipulate information to align with their goals to pressure groups माने थर्ड हला democratic participation they enhance democratic participation by representing various interests they may lead to unequal representation is dominated by elite groups तांको तांको भितर भी ओके गोटे ग्रुप रोजी जो माने लेट्स से बस मालिकों का କଥା हम कहूछु तो बहुत रिच लोक भी थिबे सेतरे माने टिके जो मानकर गोटे बस अछि और जो मानकर 50 टा बस अछि ओके दी जन का कंडीशन टिके अलगा थिबे
right? Lobbying activities, so effective in bringing concerns to lawmakers, potential risk of unethical practices and corruption. मते जमती लाभ हबो कि मो ग्रुप को जमती लाभ हबो, मो लॉबी की जमती लाभ हबो, आपण लेजिस्लेशन रे से जिंसडा करन. ओके, ଆମର ଏଠି ଲବିଂ ଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ରେ ନିଆ ହୁଏ, ବଟ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡେମୋକ୍ରେସିଜ ଆମେରିକା ହରିକାରେ ଲବିଂ ଇଜ ଏ ଲେଜିଟିମେଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି. ଓକେ, ତ ସେଠି କ୍ୟାରିୟର ଲବିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ଲବିଷ୍ଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଲବିଠୁ ପଇସା ନେବେ ଆଉ ସେ ଦେଖିବେ କି ସେ ଲବିର ଓକେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେମିତି ଠିକ ଠାକ ଲ ଯେତେବେଳେ ବନା ହଉଛି ଦେ ଆର୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍. ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ବି ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡା ସବୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ହୁଏ. ୟୁଏସ ରେ ଯେମିତି ସପୋଜ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି କି କିଛି ଓକେ ସେ ଡୋନେସନ ଦଉଛି, ତ ସେ ତାକୁ ଓପନଲି ସେଟା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଁ ଆକୁ ଏତିକି ଦେଇଛି ଏ ପାର୍ଟି କି ସେ ପାର୍ଟି କି ଏତିକି ଦେଇଛି, ରାଇଟ୍? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ କାହାକୁ କଣ କେତେ ଦଉଛି ଜଣା ପଡୁନି, ସେଠି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ. Anyway, ସେଟା lobbying activities. Then social reforms. So they engage in social reforms like education and healthcare, can overshadow government role leading to dependency. बहुत गुड़ा sectors अच्छी जोठी की government रो service पाई ओके लोक माने एबे आउ एते से माने डिपेंडेंट नाहंती क्या ना ए प्राइवेट सेक्टर सेटा प्रोवाइड कर दोछ, राइट? जेमती गवर्नमेंट कहूची एबे कि हमरो हला मिनिमम ओके गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट? तामाने कोन ना जोठी गवर्नमेंट रो काम नाही ओके, सो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग इज बिजनेस, सेटा जा से कहउचली कि लेट्स से फोन कंपनी गोटे ओके अछि तो गवर्नमेंट रो फोन कंपनी मने कोन दरकार, 5 स्टार होटल्स गवर्नमेंट रो कोन दरकार, गवर्नमेंट कहीं चलेबो सेटा. इवन रेलवेज ओके यू सी इन other countries mainly capitalistic countries हरिकारे, you see in US, you see in Britain, तांकर सेठी रेलवेज तांकर एमट्रैक अछि ओके एंड अदर यूरो रेल एगुडा सब यूरोप हरिकारे अछि, बट द गवर्नमेंट कोन चलुछि रेल्स से कंपनीज जेमती हमरो ओपन स्काई पॉलिसीज अछि ओके, हमरो एयरलाइंस जेमती गवर्नमेंट रो एयरलाइन नहीं एयर इंडिया गला पर ठीक सेमती आस्ते आस्ते मे बी एबे तो असंभव बिकॉज इट इज आल्सो रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड ऑल. एटा भी गोटे क्वेश्चन गोटे बहुत इंपोर्टेंट कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज. ओके, लेट्स से गोटे क्वेश्चन टे कहूची आपण जे तक आंसर करि परिबे ओके यू कैन ट्राई इट कि लेट्स से गवर्नमेंट ओके हैज नो बिजनेस ओके in being in business, right? With reference to this statement, okay, critically analyze the feasibility and pitfalls of complete privatization of Indian railways. ठीक है, तो सेटा से हिसाब रे हम तो देख पाए. Again coming back to this question, protection of minorities, so it acts as a voice for marginalized communities and all types of minorities. Okay, they can sometimes polarize society along communal lines. Okay, pressure group नॉर्थ इंडिया रे कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप समाज जोड़ा बोलते ओडिसा रे थैंकफुली एते नै, बाहर नॉर्थ इंडिया रे स्पेशली कि या आमो समाज पे ए जिंसटा दरकार काइंड ऑफ ए खाप पंचायत आउ पॉलिटिशियंस माने पूरा मानंती त से मान जतरा महापंचायत डाकिबे आउ डिसीजन नेबे ए जिंस हबा दरकार, से माने बहुत गुडे स्पेशली हरियाणा एंड नॉर्दर्न अदर ओके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स रे राजस्थान वरिकारे बहुत सेटा माना जाय. So they can sometimes polarize society along communal lines. Then environmental advocacy play a vital role in environmental conservation. Au jetu soda bada bada groups suda, so semane just if they take some decision, for example apan gote padthila Microsoft upare okay kebe se paperless ki carbon print tara kameva pai se tara deichi target, right? Conflicts with industrial interests may lead to economic challenges. Regarding prelims ro detailed answers, तो सेटा with detailed answers अपन telegram group रे already दिया ही सर्च ओके 15th और 16th रे, तेणु अपन सेटा देखि दे परिबे. Some of the questions are confusing because different sources रो ओके different answers मिलुची, but जेति की हेई पारुची that has been given in the telegram channel with the discussion. Okay, then economic pressure, so business groups may foster economic development, may lead to crony capitalism if not regulated. तो ये pressure groups में फिकी है वाला कि आउ अलगा जो आपन करो
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अच्छी स्टेट लेवल रे भी से माने कौन से माने देखिए कि आम बिजनेस ओके सोसाइटी टा सेटा जेमती ठीक रे रहइबो then legal framework they exist within the democratic legal structure lack of strict regulation may lead to misuse okay so comparative perspective with India Odisha को India से compare करिए similar to trends across India reflecting a mix of positive and negative aspects एटा general जिंस हमें लिखिले ओके 7 मिनिट रे ए सब गुडा लिखि हबनी प्लस आउ गोटे पार्ट रहिछि सेटा आपन को द को ग्रुप सुडा ठीक अछि जेमति किछटा एग्जांपल्स देला ओडिशा कृषक सभा ओके चासी मूलिया आदिवासी संघ ठीक अछि ताको अवश्य गवर्नमेंट इनिशियली ताको गोटे प्रो नक्सलाइट ये वाला होतला बट स्टिल सेटा एडवोकेसी ग्रुप हिसाब रे जिवो ठीक अछि लॉ पई ठीक अछि तो लीगल अरीना रे अछि देन पॉलिटिकल अरीना रे भी अछि दी तीनटा एग्जांपल्स आपण दे परिबे एथरे प्रेशर ग्रुप्स इन ओडिशा आर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप but require vigilant oversight to ensure that they contribute positively to democracy and governance. Balancing their role is essential for maintaining an equitable and transparent political process in alignment with broader democratic principles in India. ठीक है ओवरऑल एटा रहउची बट मेन जिंस होला हमरो पॉइंट्स ओके तो पॉइंट्स हमें जेतिकी पॉसिबल हबो 7 मिनिट रे लिखिया पे दैट विल ट्राई टू राइट सो नाउ जो माने बहुत जण यू नो से कट ऑफ कथा पचारछंती फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टीचिंग जब स्टार्ट करथि आई नेवर गेट इनटू दिस कट ऑफ बिजनेस ओके काहे कि ना प्रोब्लेम हला कि एनीवे आपनकर 5 रहू कि 55 रहू कि 100 रहू कि 155 रहू यू हैव टू गिव द एग्जाम आज न हेले माने एथरा को मेंस न हेले अर्थरा को तो देबे ठीक अछि तेनु आपण एमती भाबी कि पढंतु कि मु मेंस लिखुछ तो इट इज नॉट गोइंग टू यू नो हैव एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन यू जहा हो पॉजिटिव ही हो ओके सो एबे कोन करिवार अछि सो यू हैव द पॉइंट्स यू मेक योर ओन नोट्स एंड प्लीज गोटे जिंस आपण को माने माइंड रखिया पड़िबो जो माने मेंस दो पे चाहछन फर्स्ट टाइम जो माने ऑलरेडी रेडी करके रखछन निजो नोट्स तो भलो यू हैव टू मेक योर रनिंग नोट्स आपण को निजो नोट्स बनाया पड़िबो एबे मार्केट रे बहुत रेडीमेड नोट्स अछि भलो क्वालिटी रो भी नोट्स अछि ओके जेमति कि एबे रिसेंटली जदी हमें देखिबा जो फिजिक्स वाला रो संपूर्ण नोट्स सेडा बहुत ही भलो अछि ओके सो बट थिंग इज दैट अपन निजे नोट्स बनाइले सेटा बेस्ट सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन try to write one question first okay एथरे जा पॉइंट्स अछि प्लस आपण आउ कोन पॉइंट्स ऐड करिया पे चाहउछथि बट यू हैव टू राइट इट विद इन 7 मिनिट्स सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 7 मिनिट भितरे मोर केमति सरुछ ओके देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू बुझि पाल सो नेक्स्ट सेशन रे हमें नेक्स्ट 5 टा फुनी देखिबा राइट इफ यू हैव एनी डाउट्स आपण किछि आंसर राइटिंग ऊपर किछि पचरे आफ्टर वी स्टार्ट विथ like the answer writing sessions okay इधर open sessions भी रहिबो आ जो WhatsApp group ता तापे मु Telegram रे भी दे देबी बट WhatsApp group रे I will be sharing जो माने खाता पठौचंती करेक्शन पई मु करेक्ट करी सेठी शेयर कर देबी राइट सो आपण भी देखि परिबे प्लस आपण भलो जे लिखथिबो ताकू देखि कि अन्य मान भी जान परिबे कोनटा करिवार अछि ओके सो दिस इज जो सेकंड नंबर ता स्क्रॉल होची दैट इज माय नंबर 943700 2210 you can WhatsApp me okay if you have any doubts and all आउ जदी बहुत पिलांगर किछि गोटे कॉमन डाउट्स अछि ताले जोडा कि नेक्स्ट क्लास रे मु सेटा डिस्कस भी कर देबी सो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड ऑल यू कैन WhatsApp ओके किछि जण पिला WhatsApp करथिले फॉर ए डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीलिम्स तो सब 100 टा क्वेश्चन रो ओके explanation ଆପଣଙ୍କର Telegram channel ରେ already ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖି ଦେଇ ପାରିବେ okay well so then we'll stop here next session we'll start with question 6 to 10 okay thank you